हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। So we continue our study of Srimad Bhagavad Gita and we invoke some prayers. We chant out some prayers to invoke blessings. वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीय तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा भागवत गीता अध्ययन सत्र। पिछली बार तक हम 2.7 तक पढ़े थे, श्लोक का अनुवाद तात्पर्य, और आज उसी का और थोड़ा अध्ययन करेंगे और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। भागवत गीता, अब ये देखिए, ऐसा अद्भुत दर्शन है। भगवान क्या कर रहे हैं अर्जुन के भाव को, अर्जुन के मनस्थिति को, अर्जुन के विचार को इत्यादि, उन सब को दिशा दे रहे हैं ना। और ये एक्चुअली जो भागवत गीता का जो ज्ञान है, संबंध है, ये नेचुरल है। एक्चुअली ये ऐसा दिशा, ऐसा संबंध जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और प्रकट कर रहे हैं, अब नेचुरल भी है। और भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मैन्युफैक्चर या कुछ नया बता रहे हैं, नो। और भगवान को यही आता है, क्योंकि भगवान को माया क्या है ये नहीं पता ना। भगवान को अज्ञान अज्ञान का कोई लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है भगवान को। अविद्या, ज्ञान, पाप, छल, कपट इत्यादि, इसका कोई लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है भगवान को। और भगवान हम सबको जानते हैं, कण कण से, जितना बढ़िया हम अपने आप को नहीं जानते, है ना? तो भागवत गीता इज ऑल टू give us a direction in life, help us build our thoughts, help us build our thinking pattern, our mental faculty, which will give direction in our life. How do we deal, engage, participate in life? How do we find more confidence actually in life? How do we find ourselves more enthused in life? Otherwise, जीवन बहुत, life would be very dull without confidence, without enthusiasm. Life would be very dull. Lack of motivation, no? Otherwise, lack of inspiration, motivation. So Bhagavad Gita is all to understand the the heart of Krishna, the mood of Krishna, the desire of Krishna. What actually Krishna, the message of Krishna, what does he want to tell us? What has he got for us? तो ये जो भागवत गीता का अध्ययन सत्र है, भागवत गीता का अध्ययन है, ये इसलिए नहीं है कि हम में से कोई पंडित या पंडिताइन बन के निकले ना। ऐसा नहीं कि भाई हमने पाठ कर लिया, हाँ 18 अध्याय का पाठ है, पूरा कर लिया जी हमने, इतने महीनों में, इतने दिनों में, एकदम श्लोका बाय श्लोका जाके अनुवाद भी पढ़ा, उससे ऊपर तात्पर्य भी पढ़ के पूरे हम तो बन गए पंडित भागवत गीता में। और कहाँ पे क्या है पूछ लो, हम बता देंगे। खैर वो भी अच्छी बात है, कोई भगवान के दिव्य शब्द है ना, दिव्य अनुवाद तात्पर्य है सब, उसको पढ़े, पुण्यवानी है, सुकृति है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है हमें पंडित बनना है या पंडिताइन बनना है। भागवत गीता अध्ययन का तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान को कैसे जाने, भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान के साथ हमारा कैसे संबंध बने हमारा, कैसे हम भगवान के भाव को समझ सकें, कैसे हम भगवान से फिर प्रेम में जुड़ सके। अर्जुन यही कर रहे हैं ना, भगवान के भाव को समझना और भगवान से प्रेम करना। और प्रेम का तो चलो, अ, सरलता से बताओ, प्रेम की क्या परिभाषा? इन सिंपल understanding, how would we define love? What does love mean? What is the meaning of love? जब हम किसी से कहें भाई हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या अर्थ है उसका?
Preeti या Lakshmi ji, Hare Krishna, nice that you have joined. Abhishek, Harsha, Diksha, others if they can say. क्या अर्थ प्रेम का? सर पूरा तो नहीं शायद बता पाऊंगा, बट इसमें ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे हम किसी को ट्रस्ट कर पा रहे हैं, बराबर, वेरी वो नाइस। बहुत भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्टेड हैं, वो लव की बॉन्ड है। तो ये चीज तो है। हाँ, प्रेम का तो ये फाउंडेशनल है। ट्रस्ट तो फाउंडेशनल है, बुनियाद है हर रिलेशनशिप की ना। ट्रस्ट तो एक बुनियाद है। रेस्पेक्ट थोड़ी बात की बात है, इत्यादि, लेकिन ट्रस्ट इज अ मस्ट। वो प्रेम का तो अर्थ यही है वास्तव में, क्या प्रेमी का सुख, प्रेमी के सुख का चिंतन। Love, the meaning of love is to always seek the joy of the beloved, the person whom we love, to seek the joy, to see the joy of that person. तो प्रेमी का सुख, and in order to understand what makes a person happy, है ना, what makes him joyous, प्रेमी का क्या चीज, प्रेमी हमारे जो प्रेमी है, उनको क्या चीज है जो प्रसन्न करती है, सुख देती है। तो उसके लिए उनके मन को समझना होगा ना, मन का भाव, टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स हार्ट, what makes him really happy, what makes her really happy, what is good. And someone may say, well, alcohol makes her really happy, but is it a good thing on our part if we actually get someone help, make someone drink more and more alcohol, yeah, drink alcohol even less and less or more and more, whatever? No, no, that's not really beneficial, that's not really good. तो प्रेम का तो यही अर्थ है कि हमारे प्रेमी का सुख का चिंतन, क्या हमारे प्रेमी को क्या सुख देता है, और उसका चिंतन मनन करके उसको क्रियान्वित करना, है ना, टू ब्रिंग इट इनटू एक्शन। सो प्रेम का अर्थ सेवा, बिना सेवा के प्रेम नहीं है, और बिना समर्पण के भी प्रेम नहीं है। बिना समर्पण, बिना सेवा के, विदाउट surrender, without shelter, without surrender, and without service, there is no love. Without service, it's all, otherwise it's all lip service, as they say, na, lip service. But study of Bhagavad Gita, Krishna Bhavanamrit, is not to just keep us at lip service level. No, rather it is to go at heart, core of our heart. And by heart, not meaning this physical lump of matter heart. No, by heart meaning our real, the core of our existence, our thought process, attachment, and everything. So, study of Bhagavad Gita, this is the objective. By studying Srimad Bhagavad Gita, we pray that we actually understand Krishna's heart. What is in Krishna's heart? What does he want from us? What has he got to say? And how actually can we bring it in our life? Through service. How actually can we put it in our life? Apply it in our life. So it is not a study to become Pandit or Pandita. ये कोई वैसा नहीं कि थोथा गाना बाजेगा ना, कई बोलते हैं ना ऐसे कि थोथा चना बाजेगा ना, कि भाई पढ़ पीट के पोथे भर के कोई हमें वो नहीं करना, बुकवाम या मगअप या उस हिसाब से। ये तो भगवान के हृदय का भाव को समझना और उस भाव में अपने आप को लाके भगवान की सेवा में जोड़ना, यही उद्देश्य है। तो इसी प्रार्थना से, इसी आशा अभिलाषा से हम शुरू करते हैं। तो हर्षा, whenever you are ready, share your screen. We'll go through to 7. हिंदी में शायद आपके पास हो तो वो पीडीएफ तो हिंदी में शेयर करो, नहीं तो इंग्लिश भी फाइन है। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा
पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतां यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हाँ, इंग्लिश में शेयर करिए फिर। हिंदी नहीं है तो इंग्लिश में करिए। तो ये श्लोक का अनुवाद तात्पर्य हमने पिछली बार भी पढ़ा था, लेकिन फिर से आज थोड़ा सा और इस पे प्रयास करते हैं चर्चा करने का। Abhishek, just read the translation, text 7. Okay. Should be on your screen now. Yeah. Now I'm now I'm confused about my duty and have lost all composure because of misly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. हम्म, तो यहाँ अर्जुन सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। जीवन में अगर कुछ श्रेष्ठ काम करना है ना, हमें वास्तव में श्रेयस्कर श्रेष्ठ काम इत्यादि, तो भगवान की शरणागति लेना। उससे ऊंचा कोई काम हो ही नहीं संसार में। उससे ऊंचा कोई काम ही नहीं है। तो अर्जुन ने अभी तक तो चार कारण बताए। ओके, हर्षा, रिमूव द स्क्रीन नाउ। विल जस्ट डिस्कस विदाउट सीइंग द स्क्रीन फॉर नाउ। तो अर्जुन ने अभी तक चार कारण बताए युद्ध नहीं करने के, है ना। पहला कारण अगर ऑर्डर में भी देखें तो भाई आउट ऑफ फैमिलियल बॉडीली रिलेशनशिप, तो वैसा कंपैशन, वो पहला कारण। हम्म, और दूसरा कारण कि भाई सेंस एंजॉयमेंट में बाधा आएगी। वो दूसरा कारण कि भाई अगर जब सभी नहीं रहेंगे इत्यादि, तो फिर क्या हम मजे करेंगे ना। ये बहुत बड़ा कीड़ा है ना हम सब में। मजा मजा मजा, या कुछ मजा नहीं है, कुछ मजा नहीं है, कुछ चाहिए, कुछ नया, कुछ कुछ कुछ, है ना। तो ये भाई किसके साथ मजे करेंगे, किसको हम दिखाएंगे इत्यादि, घूमेंगे फिरेंगे। जब आप सारे ही चले जाएंगे, बंधु बांधव सब कोई, तो फिर हम किसके साथ मजे करें। और फिर भगवान को ही कह रहे हैं कि पाप लगेगा। बोलते ना हम कई बार, हमको तो भगवान जी पाप लगेगा आपको। भगवान भगवान को पाप का स्पर्श ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं भगवान को पाप क्या है। अज्ञानतावश हमें ऐसा लगता है। तो ये करके और फिर जो कुल परंपरा इत्यादि, वो सब नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। है ही ना, देखो। अब एक बात देखिए, थोड़ा पता चल जाता है ना समाज कहाँ जा रहा है। अ, विशेष करके कहने को तो हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से, ओ इंडिया इज अ वेरी होली लैंड, स्पिरिचुअल लैंड। स्पेशली वी सी एनी वेस्टर्न बॉडी पर्सन ट्रेवलिंग इन इंडिया, कोई टूरिस्ट आते हैं तो हम क्या, ओ यस आवर कंट्री इज वेरी गुड, इट इज वेरी होली एंड ऑल। व्हेन दे कम टू विजिट ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा एंड प्लेसेस and all, then yeah, suddenly we become so spiritual and all. ठीक है, आई मीन है भी, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। Certainly it is, and there are people as well. There are genuine, pious, spiritual people who are practicing also, and practicing very nicely, inspiring others as well and all. But देखो, अब ये कल्चर की बात ना, कल्चर की बात कैसे, जैसे लॉकडाउन हुआ ना भारत में, और सभी जगह हुआ खैर। जब पहली बार 2020 में लॉकडाउन हुआ था, और उस लॉकडाउन 2-3 महीने आई बिलीव चला होगा, समथिंग 3-4 मंथ्स। एंड फिर लॉकडाउन के बाद एक बार खुला, या हफ्ते में 2 दिन या ऐसे समथिंग, सम अरेंजमेंट वाज देयर, राइट? शॉप्स वर गेटिंग ओपन मे बी ट्वाइस अ वीक और समथिंग। अब आप लोग बताओ, मीडिया में, इन इंडियन मीडिया, व्हाट वाज बीइंग शोन व्हेन सम शॉप, व्हेन शॉप स्टार्टेड ओपनिंग एंड ऑल?
Was it being I shown remember somewhere? Hmm, long queues at wine shops. hmm, huh? Long queues at wine shop, beer shop, alcohol shop, ये सब ना. And how many was it being shown like long queues at say medicine shops or grocery shops? Maybe, maybe some queues in medicine shops as well, some at grocery shops as well. But see, long queues where wine shop. एक नॉर्मल शराब की बोतल कितने में आती होगी? अगर अंदाजा हो तो या ऐसे ही गेस लगाओ, अनुमान लगाओ। ₹100 से कम में तो क्या आती होगी ना? ₹100 तो लगते ही होंगे और कोई अच्छी थोड़ी-सी ढंग की अगर शराब हो जो एकदम स्वास्थ्य को खराब सीधा ही ना कर दे समझो। 100-200 मिनिमम लगता ही होगा आई बिलीव। और भागवत गीता कितना में देखो भागवत गीता कितना है? 150 कुछ ऐसा 130 150 समथिंग। अंग्रेजी का हिंदी का थोड़ा सा ज़्यादा 180 होगा या क्या समथिंग बट दिस मच ओनली ना। अब कहने को तो पैसा नहीं है। ठीक है वो लॉन्ग क्यूज लंबी कतार लग गई कहाँ शराब की दुकान के आगे। तो ये बताता है ना लोग रह नहीं पा रहे हैं। अब मंदिरों के बाहर देखा क्या लंबी कतार लग रही है लॉकडाउन के बाद। कितने लोग हैं मिस जो कर रहे थे मंगल आरती को मिस कर रहे थे। हाँ मंदिर जाना और मिस कर रहे थे। बहुत कम आई मीन कर रहे थे लोग इत्यादि बट वी डोंट सी एट सच अ मास लेवल where long queues to attend morning program, temple programs and festivals and things. No. और उससे बड़े आश्चर्य की बात अ, क्या कि कई अब क्या कहें माताएं स्त्रियां महिलाएं लड़कियां है ना शराब की दुकान के उस लॉन्ग क्यूज में दे वर ऑल्सो स्टैंडिंग इन दोज लॉन्ग क्यूज। ये और थोड़ा सा आश्चर्य की बात आश्चर्य पता नहीं आश्चर्य की बात है या क्या है। But there were many girls, young women. They were seen here standing outside these wine shops in queues to purchase some liquor. Or if they themselves were not sending, then some of their friends would have gone. Some arrangements and things like that would have done. तो जहाँ पे ये बात ऐसी and big cities ना big developed cities अब ये is this the sign of development and is this the real heritage culture इत्यादि and again that doesn't mean that man has any got license to drink alcohol अगर समझो वहां पे एक एक भी लड़की खड़ी नहीं होती तो कोई पुरुषों को कोई भी अधिकार नहीं मिल जाता कोई भी लाइसेंस नहीं मिल जाता सिगरेट तंबाकू गुटखा इत्यादि खाने पीने का शराब पीने का बाकी वी कैन सी फॉर आवरसेल्व्स बाबा देखो इट हेल्प्स थिंग्स व्हेन वी सी इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ठीक है आई एम सीइंग ट्राइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव there are so many companies na in Delhi, Gurgaon, Noida, Bombay, Pune इत्यादि big companies and all जहाँ पे सभी काम करते हैं पुरुष भी और महिलाएं भी माताएं भी इत्यादि और सारे पढ़े लिखे ही हैं अब भारत में विडंबना है कोई 10वीं 12वीं बीकॉम पढ़ लिया एमबीए कर लिया इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो भाई वो समझदार है वो विद्वान है नो बट वैदिक कल्चर डजंट से दैट ये एबीसीडी की पढ़ाई क्या पढ़ाई है बाबा विद्वान तो आदमी तब कहा जाता है जब चरित्र हो है ना तभी कहा जाता है इसके कमर में हड्डी तभी है जब पता चले चरित्र है कुछ प्रिंसिपल्स हैं जस्ट चेक फॉर योरसेल्फ सो मेनी दिस कंपनीज अब इन कंपनीज में कितनी लड़कियां भी जॉब करती है एंड हाउ मेनी ऑफ दीज girls actually who are working in these companies and all how many of them could actually be in some sort of drinking habit if not daily if not regular but whatever some sort of this sort of drinking culture again having said that it doesn't give any license any rights for boys to indulge in drinking तो ठीक है अर्जुन के ये कि भाई कल्चर कितना बड़ा हिट होगा कल्चर में हो ही रहा भारत में थोड़ा सा तेज गति से ही और फिर अर्जुन अब ये सब देखे फाइनली अर्जुन कह रहे हैं कि भाई अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी and now I am confused about my duty I don't know what to do and also
Kindly help me, Krishna. Kindly help me. So another question. और अब अर्जुन भगवान की शरणागति ले रहे हैं ना यहाँ पे, साक्षात कह रहे हैं ना, साफ साफ वो कह रहे हैं ना भगवान को कि भाई भगवान अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे आप शरणागति दीजिए. So now I am your disciple and a soul surrendered unto you. So a question, tell me one person who is not surrendered in this world. Anyone who can claim that I am not surrendered. I have not taken anyone's shelter. Can anyone say, for even for a moment, not live about a year, है ना भाई चलो, not just when one starts working or then or after retirement, okay, now I do not need any surrender, I'm not surrendered or sheltered. Even for a moment, I'm saying, can anyone say that I'm not surrendered? कौन है संसार में जो शरणागत नहीं हुआ हुआ है किसी ना किसी के कहीं ना कहीं पे? कोई नहीं ऐसा. नो वन. Everyone is surrendered, everyone is sheltered. बट 99 से 99%, 99.99 रेकरिंग. किसको सरेंडर्ड है, किसको शेल्टर्ड है? माया को. माया की गोद में सब आराम से बैठे हैं. माया का एक मतलब समझो, मैं और मेरा, है ना. माया का मतलब एक मतलब यही समझे, मैं और मेरा. और भगवान, ठीक है, भगवान गोल हुए में. तो सभी शेल्टर्ड है, सभी सरेंडर्ड है. लेकिन अर्जुन की यहाँ बुद्धिमत्ता देखिए. वो क्या बोल रहे हैं भगवान को? नाउ आई एम अ सोल डिसाइपल, आई एम योर डिसाइपल एंड अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू. ही इज कंफ्यूज्ड एंड अर्जुन, सिंपल, अर्जुन इज कंफ्यूज्ड. He is surrendering to Krishna and Krishna will provide him clarity. So Bhagavad Gita is this journey only. क्या जर्नी है ये? ये है कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जाने की जर्नी है ये, है ना. ये सफर है, जीवन का सफर. अज्ञानता से दिव्य ज्ञान की ओर, ज्ञान भी नहीं, दिव्य ज्ञान की ओर अर्जुन को लेके जाएंगे भगवान. और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को भी लेके जाएंगे. हम सबको भी लेके जाएंगे अर्जुन के माध्यम से. तो हमें भी इतना ही करना है, केवल अपने आप को भगवान को समर्पित करना है, भगवान का ही आश्रय लेना है, बस उतना ही करना है, और कुछ नहीं करना. और जैसे हमने पिछले भी चर्चा करी थी ना, आश्रय लेना अनिवार्य है भाई. पहली बात तो कौन आश्रित नहीं है? सभी आश्रित है ना. देखो, मोबाइल फोन पे आश्रित है, इंटरनेट पे, टेक्नोलॉजी पे. किस चीज पे हम आश्रित नहीं है? प्रकृति पे कितने आश्रित है? एक दिन सूरज ना निकले हमारा काम बन सकता है क्या, बताओ? थोड़ी सी भी व्यवस्था इधर उधर कुछ हो, नहीं. हम पूरे आश्रित हैं. हम सो नहीं पाए अगर एक दो दिन हमारी तबीयत खराब हो जाए, ज्यादा हम सो भी नहीं सकते, ज्यादा खा भी नहीं सकते, बिना खाए रह भी नहीं सकते, इत्यादि. हम सभी पूरे के पूरे आश्रित हैं. लेकिन यही माया है ना, माया हमें ढक देती है. We all are sheltered, we all are surrendered, but Maya covers up our real consciousness, our original consciousness, our real knowledge, and lets us be in ignorance. Why? Because we want to be in ignorance, because we like being in ignorance. So Maya facilitates, or Krishna facilitates via material energy, via Maya Devi. Such an arrangement कि ठीक है भाई, रहो अंधकार में. At the same time, he's so kind that he came upon and spoke this Bhagavad Gita for our ultimate benefit. So जैसे सरेंडर का तो एक नेगेटिव कोनोटेशन आता है संसार में ना, कि भाई ओ भागवत गीता आप सरेंडर करो भगवान को, देखो अब इनका स्टार्ट हो गया ना, ये हरे कृष्णा वालों का अब स्टार्ट हो गया, देखो धीरे धीरे ये ऐसे फांस लेते हैं, है ना. पहले तो चिपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे और फिर अब भगवान को समर्पित हो, इत्यादि. अरे बाबा, कौन सरेंडर्ड नहीं है? हु इज नॉट शेल्टर्ड? हु इज नॉट शेल्टर्ड? एवरीवन इज शेल्टर्ड. और ये सरेंडर तो ऐसे ही हम, लेकिन इनडायरेक्टली वे में,
अभी कृष्णा पे सब कुछ टिका हुआ है ना, सब कुछ आश्रित है कृष्णा पे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। और अर्जुन अब डायरेक्टली अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और देखिए कितनी बुद्धिमान है अर्जुन, कितने बुद्धिमान है। ज्यादा देरी नहीं लगाई उन्होंने समर्पण करने में कृष्णा के प्रति। कितना समय लिया, 3-4 अपनी बात बताई और फिर सीधा हाथ जोड़ लिए ना। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम बोल दिया बस। और हम देखो भाई, सालों साल, जन्मों 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 से नहीं भाई, शरणागति हम नहीं ले रहे, या आधा अधूरी एकदम से ऐसे शरणागति ले रहे हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, जब तक कमर पूरी नहीं टूटे ना, हम साधु संग नहीं करेंगे भाई। हम माला नहीं करेंगे, हम नाम जप नहीं करेंगे, हम भागवत गीता का अनुशीलन नहीं करेंगे। लेकिन जब ऐसे लगता है ना कि भाई, नाउ दैट pants is on fire or something, there is an English expression, uh, until and unless we are not fully burning, we wouldn't take shelter of Krishna, we wouldn't associate with devotees. Generally speaking, we may not want to take shelter of Bhagavad Gita, of the holy names. And it's only when we see, okay, now I need to do something and all, then we might, okay, let me try Bhagavad Gita as well, let me. तो भाई इतना क्यों हम अपने आप को जला दें, इतना क्यों पहले जला दें? एंड दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ अर्जुना ना, इज नॉट, he thought, okay, no, I cannot afford to let myself burn anymore. भाई अब और मैं देरी नहीं कर सकता, और मेरे को अब कुछ और दिमाग नहीं लगाना है। अब बस भगवान जो बोलना है बोल दिया। ही इज एक्नॉलेजिंग दैट आई एम कंफ्यूज्ड। Someone who acknowledges I am confused, in Krishna's eyes, he is an intelligent person. He is a knowledgeable person in the eyes of Shastras, in the eyes of Krishna's. है ना? And in संसारी, भगवान के दृष्टिकोण से अगर कोई भगवान को बोले कि भाई भगवान, मैं तो बुद्धिमत्ता मेरी हर गई है, मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, विवेक खो दिया है मैंने, तो वो व्यक्ति भगवान की नजरों में, शास्त्रों की नजरों में बुद्धिमान बना कहलाया जाता है, उसको बुद्धिमान मानते हैं। और संसारी नजरों में देखोगे ना, संसार में अगर किसी को बोलो भाई मैं कंफ्यूज हूँ, तो लोग यही समझते हैं कि भाई ये मूर्ख आदमी है, ये थोड़ा ढीला आदमी है। इन वर्ल्डली मैटर्स, इफ वी टेल समवन, oh, I'm very confused, people will say, okay, something is wrong with him, he's not fit for survival, है ना, he's not fit enough, he's not up to date with time and all. तो वास्तव शरणागति भगवान की लेनी चाहिए। भगवान जज भी नहीं करते, संसार तो जज करने पे तुला पड़ा है। कृष्णा नेवर जजेस, and world is full of judgment only, never leaves an opportunity to judge us. So we should not wait, na, we should not wait uh, until we are too old or we are too burned. जब इतना ही जल जाएंगे, फिर कहाँ भागवत गीता का अनुशीलन, कहाँ नाम जप करेंगे? अपने आप को पहले ही इतना बुझा जला दिया हमने। So Arjuna is not letting that happen. Another beauty thing Arjuna see, he is not out of passion, more out of passion. He's not saying to Krishna, "Oh, I will change this, I will change that, I will let me do this, let me do that, let me make this adjustment, let me make that adjustment." He very honestly. Thing is to be honest with Krishna. Arjuna is seeing Krishna, na, and he's being honest. We may not be able to see God. Physically, no one can see as such, and no one can disprove as well, Khair. Uh, but seeing as in, we may not be able to perceive, experience, realize, or see the mercy of Krishna directly happening in our life. But we should be honest. When we are honest, like Arjuna is giving all these arguments, and honestly is saying that Krishna, please help me out. This is beyond me. Only that much is needed. Now I take your shelter. Even though in words, ठीक है उतना ही करो. That is also very good enough. So Arjuna is not saying that, okay, I will do this change, I will do that adjustment, he's not doing any calculations. He's not doing such sort of calculations and giving proposals to Krishna. Krishna, okay, fine, I understand this is my problem and this is how I will solve it. Let's do this, let's do that. No. Nor is he saying, oh Krishna,
That person needs changing, that person needs changing, he needs changing, situations need changing. No, he himself is saying to Krishna, Krishna, please change me. I need to be changed. But I cannot do it on my own. I cannot do it through by myself. Please help me change myself. तो अर्जुन परिस्थिति को दोष नहीं दे रहे हैं, सामने वाले को दोष नहीं दे रहे हैं, और ना ही उनमें परिवर्तन या कुछ लाने का। वो स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए भगवान को कह रहे हैं कि भगवान मेरे में कुछ कमी है, आप मुझे ही ठीक करिए। मैं अपने आप से अपने आप को नहीं ठीक कर पाऊंगा, नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज, वो बोलते थे, वेरी नाइस कोट्स, अमेजिंग कोट्स ही हैज रिटन गिवन, one of which is what, that the person, I don't know the literal, but a quote something, it goes like this, on those line, on these lines: a person who considers, who believes, who thinks, who considers that the world needs reforming, he is the one who needs reformation first, है ना? जिसको ऐसा लगता है कि भाई संसार को बदलाव चाहिए, है ना? मेरी माँ को मैं बदल दूं थोड़ा, मेरी बहन को बदल दूं, मेरी पत्नी को बदल दूं, पति को बदल दूं, बच्चों को बदल दूं, इसको मेरे मैडम को बदलना चाहिए, टीचर को बदलना चाहिए, थोड़ा-सा अपने आप में बदलाव लाना है। मैनेजर को बदलाव लाना है, इत्यादि, इत्यादि। So one who thinks that ये संसार में बदलाव, संसार को बदलाव लाना इत्यादि, उस व्यक्ति को बदलाव चाहिए, उस व्यक्ति को बदलाव चाहिए। और as sadhakas, as practicing Krishna consciousness, once we start practicing, once we start doing some japa, associating with devotees, honoring prasadam, reading Srimad Bhagavad Gita, Bhagavatam, listening to Kirtan classes and all, we will very soon will realize that actually it is me, it is I personally who needs changing, who needs evolving, who needs developing. एंड ये भूल जाओ संसार कभी बदलेगा, संसार तो ऐसा ही है बाबा, संसार कभी नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा, ना भगवान बदलेंगे। भगवान को वैसे भी कोई कमी नहीं है भगवान को, हाँ, तो उस सेंस में, और संसार भी नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा, केवल मैं व्यक्तिगत रूप से। अगर कोई बदलने की किसी की संभावना है तो वो मेरी है, और बदलना चाहिए भी किसी को व्यक्तिगत रूप से, मेरे को ही चाहिए बदलना। सो see, again through Bhagavad Gita, Krishna, Arjuna fights, na? He fights, which is the proof. Krishna does not change any external situation. He doesn't do any changes there. He changes Arjuna internally throughout. He changes Arjuna. So yeah, who is not sheltered? Who is not surrendered? Every one of us is. If there is no one, then please let us know. एंड इट इज अ जॉय। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? हम आश्रित हैं। क्या बड़ा सुख है! जैसे देखो, माताओं का ना, कितना बढ़िया। अब तो थोड़ा सा अलग है, खैर। और भाई ऐसे पूछते थे ना छोटे में अभी भी, खैर, भाई लड़का या लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? और किसके बच्चे हो, किसके बालक हो? माताओं का भी क्या बोलते थे कि passport na, throughout the world, when passport is made, and any other official legal document for that matter, it doesn't just end with the person's name. It asks person's name, his father's name, or spouse's name, husband or wife, whosoever, spouse's name, partner's name, है ना? तो ये चीज, तुम कौन हो और तुम किसकी हो, है ना? कौन हो और किसकी हो? अब कौन हो, किसकी हो, या कौन हो, किसके हो, हु आर यू एंड whose are you? Who are you and whose are you? Oh, I'm such and such. And whose, meaning whose child, son or daughter are you? Or whose partner, husband or wife are you? है ना? तो ये, and this is the biggest joy in life, to know that way, wow, I have a shelter. This is such a highest joy in life. Again, in my societal dealings, this is not seen very good.
This is not seen as very good. Oh, look, he's a weak person. He needs shelter. But one who takes shelter of Krishna is the strongest. Is the strongest. So it's all paradoxical. पूरा विरोधाभास है. जो संसारी तौर तरीके हैं, आंकलन है, व्यवहार है, और दिव्यता के तौर तरीके आंकलन व्यवहार में पूरा उल्टा है, अपसाइड डाउन, पूरा पैराडॉक्स है. In societal dealings, one who seeks shelter, one who wants shelter, one who says, I am weak, I need shelter, he is not seen very nicely. Okay, people behind his back or maybe front as well may tell him that, okay, no, he is actually weak. But in Krishna consciousness, in spiritual practice, one who approaches Krishna and says, oh, Krishna, I'm weak, I need your shelter, please give me shelter. He's saying, wow, he's such a smart person. He's such a realized, such a smart, realized person. He's taking shelter of Krishna. Mm. So, this thing, taking shelter of Krishna, आश्रय आश्रय होना, आश्रित होना, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है. और सब आश्रय, प्रकृति देखो ना, चल भी आश्रय ढूंढ रही है ना, आश्रय ढूंढती है, आश्रय पाती है. पेड़ को अगर आश्रय ना हो, shelter, if a plant, a tree doesn't get shelter, doesn't find shelter, it can never grow. It can never grow. It can never blossom. Everyone and everything is actually sheltered. We all are sheltered. And now is a question of taking shelter of Krishna. And then life will be transformed from confusion to clarity. From confusion to real clarity. So Arjuna is saying Karpanya dosho pahata swabhava prichhami tvam dharma samura cheta. And he's saying what, I'm confused about my duty. So again, all of us, we experience confusion in life. Can anyone again say, I've never been confused in life? I never experienced confusion. On day-to-day matters, we experience confusion in life. And we live in a cover-up society, honestly. This is why we do not discuss that. That will be an open society, not covered up society where death is always discussed, where death is never forgotten. That is real, that is the real reality. है ना? जब ये पता चले death is real, we don't know when, but it will happen sometime sure. It is inevitable. Just timing is not known, but it is inevitable. अवश्यम भावी है मृत्यु. एक ना एक दिन तो गला लगाना ही पड़ेगा ना मृत्यु को, सभी को. तो कौन उसकी कितनी तैयारी में है? हाँ. So Arjuna is acknowledging that I am confused. I need your shelter. Please help me. बोलते हैं ना भारत में, भाई किसकी है, इसकी बेटी है या इसकी पत्नी है, किसके, इसका बेटा है या इसका पति, ऐसे करके ना, कहाँ पे रहते हैं, गांव इत्यादि. तो ये आश्रय, अगेन वी डिस्कस आई थिंक लास्ट टाइम आल्सो, राइट? व्हेन वी गो फॉर अ हेयर ड्रेसर, टू अ हेयर ड्रेसर फॉर अ हेयर कट, barber or a hairdresser. So what do? We give ourselves. We sit on the chair and we give ourselves. And whatever the barber says, chin up, chin down, left, right, and all, we do it that way. And the barber gives us a good haircut. You know, and we come out. Again, some of these examples are just to help our mind understand. Someone may argue, oh, even if we do everything like that, chin up, chin down, and all, left, right, center, barber फिर भी may not give us a good haircut. All those things. This is something to help understand our mind. Actually, our mind needs understanding, na? And Krishna is not that such a sort of barber. If we give ourselves to Krishna, Krishna will make gold out of us, pure gold out of us. Has anyone been to dentist?
We all at some point would have been to a dentist. What does dentist do? Same, na? He also says the same thing. Come, have a seat, come sit and all, everything. Hmm? And we do this, we do that sort of thing. And so dentist asks us to sit and then open mouth, spit, this and that. Huh? So we give in, we take shelter of the dentist. So we all are sheltered, and Arjuna is now wanting the shelter of Krishna. And there is no higher joy in life than knowing that I belong to someone. There's no other higher joy. इससे बड़ा जीवन में सुख नहीं है. ये जब हम अनुभव करें कि भाई मैं किसी का हूँ, किसके लिए हूँ, मैं किसी का हूँ. अब यही फिगर आउट करना है हम किसके लिए हैं. सोर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. और अर्जुन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर मी. Ultimate good. So he's not asking for just for this war. This war will get over in some days, na? 18 days this war went for. But he's not asking just for the war or maybe sometime after the war. No, for ultimate for the rest of the one's life. And this is what Bhagavad Gita, the knowledge, is for the rest of our life, not for just a short period to help us go through some tough time or examination or job interview or family or financial crisis or anything. No. And confusion about duty, about morality, na? What is moral, what is real, what is true, what needs doing. वास्तव धर्म क्या है हमारा. तो उस दिन भी हम धर्म की परिभाषा समझ रहे थे ना कि ये कोई धर्म मतलब कोई पंथ नहीं है. पंथ मतलब ग्रुप हो गया ना, सेक्ट हो गया ना. तो धर्म का मतलब ये नहीं है एक पंथ, और ये एक ये पंथ वाले हैं, ये दूसरे पंथ वाले हैं. पूरा संसार में तो ये पंथ ही पंथ है. How many countries are there in currently in this world? हाँ अभिषेक, कितने देश होंगे इस संसार में अभी. और ईवी इफ यू नो. क्या कह रहे हो अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही है एटलीस्ट मेरे को. हम maybe more than 200 countries, right? If we see more than 200 countries, and if you see again the trend in last 50 years, say in last 50 years, yeah, last 20-30 years, are there more countries being more map, more flags being coming up, more countries being coming up, or less? 200 से बढ़ ही रहे हैं ना भाई. 160, 70, 80, 200 कितने बढ़ ही रहे होंगे. कम कहाँ हो रहे हैं. नो. More and more countries, more and more borders, more and more new flags, and that's United Nations uniting us so nicely. है ना. Say if you check 1950s, maybe say 150 countries. To 2020, 250 countries. Wow, we are more united now. Or is this the way? If we separate our borders as well, will we find unity then? Will we be in unity, in agreement? No. So the morality has to be checked. The morality has to be checked. Why is there chaos in family also, in relationships as well? Because that unity, that center point is not clear. तभी clash है. Individually also, why do I suffer? My body, mind, soul, spirit. Why? Because they are not in union, they are not in harmony. They are not in line with my spiritual being, spiritual nature, my original nature. This is why there is always this frustration or tiny bit of frustration or maybe a huge bit of frustration. And Arjuna is asking help in this, that please could you help me? I'm really confused and I really want to come out of it. What is ultimately good for me? So the religion or dharam is not something like this पंथ ग्रुप्स, है ना. पंथबाजी नहीं है कोई ये.
ये मेरा पंथ, तेरा पंथ, उसका पंथ, हमारा पंथ, ये फलानों का, ये इनका. It is not like Hindu, Muslim, Sikh, Isai. Krishna consciousness is not, it's completely non-sectarian. धर्म का भी ऐसे ही है. अगर धर्म ही सेक्टेरियन हो जाए तो वो धर्म कहाँ भाई है. तो धर्म is also non-sectarian, just like water. Water is non-sectarian. It is we who say, oh, this is Scottish water. Actually, in Scotland, there is a Scottish water plant or Scottish water actually. And many places, Chinese water, Scottish water, so many such things and all. We manufacture, we label it. But at the end of the day, it is water only. Yeah. Like Prabhupada classes, we hear, sun is sun. We never say Indian sun, American sun, British sun, this sun, that sun. No. प्रकृति में सब कुछ नॉन सेक्टेरियन ही है ना. So Arjuna is asking for what is the real morality, what is transcendental morality, what is ultimate morality beyond bodily designations, beyond bodily designations. जीवन में highest blessing, highest joy actually one experiences when one realizes I am sheltered. Now imagine in metro train or tube train. In London there's tube, I don't know what it is called in Glasgow, perhaps metro in Glasgow. But imagine in this tube, metro, or local train, or metro trains and all. Normally, there's rush anywhere. India, Japan, Indonesia, your Turkey or England, wherever, and there are peak hours as well. Now, in rush time or in normal time as well, a child he always feels safe and protected when he's around his mother, है ना? His mother or father or guardian or family member, someone elderly. Now there would be so much chaos going on. But if the child is holding the hand of his mom or dad, the child doesn't find that much chaos. No, he doesn't panic in that chaos. He knows, okay, I've got my mom and dad with me. They are here with me. I don't need to worry. है ना? Likewise, Arjuna is realizing now I need to take shelter. Likewise, when we take shelter of Krishna, we wouldn't be worrying, even though living in a chaotic situation, but we will find peace. There will be peace when we actually take shelter of Krishna. And Krishna will do his magic only when we take shelter, na? Barber can cut our hair only when we give our head to him. We may give money to the barber, we may give him some good words and all, but if we do not give our head to him, can he cut our hair? No. Likewise, dentist can also do good to us when we give our teeth to him, when we show our teeth to him. Otherwise, how can he? तो भगवान भी तभी हमारा भला करेंगे डायरेक्टली. डायरेक्ट भला हमारा तभी करेंगे जब हम डायरेक्ट भगवान को अपने आप को भगवान को समर्पित करें, है ना? अध्ययन करें, भगवान की वाणी का अध्ययन करें, भगवान का नाम जपें इत्यादि. These are the means of expressing our taking shelter of Krishna. And there's nothing to lose in life. What is there to lose in life? In the first place, to begin with, nothing belongs to us. Nothing is ours. So how do we say I lost something? Uh, did any of us, when we were growing up, oh, my hair color should be like this? Did any of us decided, okay, when I am 20-year-old, 30-year-old, I want to have this much weight and this much height? No. Can we reduce our height? Can we increase our height? No. कुछ है ही नहीं बाबा हमारा, तो छोड़ना क्या है? खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारा. बट ये है जो हमारा स्वरूप है ना, वास्तविक स्वरूप, वो छूट जाएगा. Our real eternal identity, only that is to be lost, or we have actually lost that. We are not in connection with that. This is why Bhagavad Gita is a revival for us, to understand our real original position and to help us come over confusion and go to a zone of clarity, ultimate clarity. Another example on this line only, and it's a bit of a shame. Uh, like it is
commonly seen in India, and problems are everywhere. In UK, lots of problems. Everywhere problems. It's just packaging is different. Just the packaging is different. But otherwise, problem is everywhere, and problem is same. Material consciousness, material perverted consciousness, lack of morality, lack of transcendental morality, lack of divine knowledge, transcendental knowledge, me and mine, self-centeredness. This is all the problem. Material bodily identification, identifying with the body, misidentification crisis. That's the biggest crisis all over the world. So see this in India, in construction sites where buildings are and all are being constructed. It is commonly observed what many women they help in the construction site doing some manual labor, carrying stones, cement, water, and walking up and down, climbing up and down. Sorry, big buildings, so much so, and all doing physical hard labor, which is a bit upsetting. It's a bit upsetting, quite a bit upsetting actually, personally speaking. And what do we see in that construction site? That the lady's child or children, young boys or girls, they would be playing around with stone, sand, water, and all, doing their plays and all. It really doesn't disturb them if tractor is coming, big machine coming, lorry coming, van coming, something going out and all, so much of noise and sound pollution and all going on. But they are fine, they are happy. Why? Because they can see, oh, my mother is here, my mother is here. So they feel very safe, very protected. Likewise, when we take shelter of Krishna, we will find real peace, real shelter, real protection. Okay, any question or comment or anything anyone would like to add or say, please? So, Harsha, share screen again. Just skim through the purport a bit. So, who is not sheltered? Everyone is sheltered. Everyone is surrendered. It's just अभी तक जिंदगी में हम माया की गोद में ही थे और अब हमारा खाता हम भगवान के हाथों में अपने आप को दे सकते हैं और पूरा जीवन ही ट्रांजिशन के लिए द होल लाइफ इज मेंट टू ट्रांजिशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन उसी के लिए है. Now see purport. The first sentence is amazing. The whole purport. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. Source of perplexity. Beautiful purport actually. Ab- See, we have to imbibe the mood of Arjuna. The sooner we come to this realization, Arjuna came very soon in surrendering to Krishna. The sooner we also come to this realization will be very helpful. अनदर थिंग, भक्त बनना ना, तो शिष्य शिष्य बनेंगे तब भक्त बनेंगे ना. अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं? शिष्यता अपना रहे हैं ना भगवान से, भगवान की शरणागति, या भगवान आप मेरे को शिष्य स्वीकार करें. और क्या करेंगे भगवान? शिष्य स्वीकार करके अर्जुन को भक्त बना देंगे. सेम हम भी उसी तरह से भगवान की शरणागति लेना, भागवत गीता भागवतम भक्तों की शरणागति लें, तो फिर हमें भी भगवान शिष्य से भक्त बनाएंगे. बिना शिष्य बने कैसे कोई भक्त बनता है? कोई असंभव है भाई, बिना शिष्यता ग्रहण किए असंभव है. अब भक्त मतलब क्या? प्रेम में ही संबंध ना, प्रेम में ही संबंध. भक्ति क्या है? भक्ति यही है, प्रेम में ही सेवा, और थोड़ी ना कुछ है भक्ति. प्रभुपाद ने कितना बढ़िया ट्रांसलेशन, ये शब्द दिया, अर्थ बताया भक्ति का. लविंग डिवोशनल सर्विस. केवल डिवोशन नहीं. सामान्यतः इन जनरली भारत में भक्ति मतलब डिवोशन, डिवोशन श्रद्धा है ना. बट एक्चुअली लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम में ही सेवा. और हमारे सेव्य कौन है? भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर. और उनकी हम प्रेम में ही सेवा करें, वही भक्ति है.
तो इसमें कोई ये नहीं, हमें कोई पंडिताइन या ऐसा कुछ नहीं बनना। केवल भगवान से प्रेम में ही सेवा, और भगवान से प्रेम में ही सेवा तभी कर पाएंगे जब हृदय सरल होगा। और पूरा भागवत गीता इसीलिए हमारे हृदय को सरल बनाने के लिए, टू ब्रेक थिंग्स इन लाइफ, टू मेक कॉम्प्लिकेटेड इनटू सिंपल। तो शिष्य बने तभी जाके सरल सहज सुखद हो जाएगा भक्ति का रास्ता पूरा। यही अर्जुन यहाँ पे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं हमें। बिना शिष्यता बने कैसे हम। और अगेन, हु डजंट टेक एजुकेशन? एवरीवन नीड्स एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, uni, homeschooling, or in the general walk of life. And this is what Arjuna is praying for, education from Krishna. So this is the ultimate mood Arjuna is showing. What is the real weakness? What is his confusion and how to come about? Likewise, we should also not wait much. That doesn't mean we blindly follow, है ना? वो भी नहीं है। For but in blindly reject भी मत करो। Krishna consciousness or Bhagavad Gita, it's not a something to say, okay, blindly follow now. No, no one is telling to blindly follow Bhagavad Gita. But if you do not want to follow blindly, then you should not reject as well blindly. Yeah. Test it for yourself, check it for yourself, apply it, but as it is. Check it, apply it, test it as it is. Yeah. These are the words of Krishna, the translation, purport, commentary by Acharyas, Vaishnavas. Associate with devotees and taste the joy in Krishna consciousness. Okay, any question, comment, or any thoughts or anything anyone would like to add or share? What do you think, Evie? Is there any one person who is not surrendered or sheltered, who has not taken shelter or say surrendered? Not really sure, sorry. You mean in this or in life? In life? In life. Not surrendered. Someone who's very they want to take control of their own lives, and they want to find in themselves what you Yes. would look for in Krishna. But obviously you wouldn't find it. Someone who wants to have complete control in one's life, no authority, no say dependency. Physically speaking, we do not live without surrender. No. We all, we all have an interrelation with each other. We all have an interconnection with each other, and now everyone's of eternal connection, eternal bond is with Krishna. So, in order to see, it's all paradox. In order to gain complete independence, the one who is completely dependent on Krishna will be completely independent. So, in order to become completely independent, make yourself completely dependent on Krishna. हाँ, अगर अपने आप को एकदम हम अ, अपने ही बल पे दक्ष बनाना चाहें, तो भाई कृष्ण को अपने आप को, हमारी निर्भरता, आत्मनिर्भर बनना हो ना, तो कृष्ण पे निर्भरता हमें बने, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे. If someone wants to become really strong, then yes, come before Krishna. Krishna will make us really strong. This is what Draupadi done. No. She looked at her husbands. No. She looked at the assembly of kings. No one could come to help her for her rescue. She looked at Bhishma Pitama, Dronacharya ji. No. She looked at the blind king and spoke to the blind king. No. Everyone had put their heads down. Hmm. And then she called out to Krishna, and with one pointed attention, that
Krishna couldn't help but come forward for Draupadi. Krishna appeared for Draupadi in the form of sari. ना भगवान ने अवतार ही ले लिया था. Krishna incarnated for Draupadi in the form of sari, and Krishna incarnated in the form of sari for Draupadi, and the sari was unlimited. There was no end to that sari. Dushasan was trying to pull that sari, and it was sari was on and on and on going on, unlimited. Likewise, we just need to chant the holy names of Krishna with as much attention. To begin with, we may not be able to chant fully with full complete attention, but if we can chant with as much attention, as much clarity, sincerity, and with that little bit of attention, we will get more attention. Krishna will give, but the Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Upayanti Te. Krishna will give us the right mood, the knowledge, the understanding, inspiration, everything to further excel, to further excel. But the first step the sadhaka only has to take. Sadhaka only has to take. See, when child starts walking and all, what the step has to be taken by the child, na? Parents, they stay at a distance, they watch and all everything, but they encourage the child to walk. But if the child is not encouraged to walk, that will really hamper his physical development, also his mental development. Likewise, the first step, and Arjuna is initiating the process now. He has initiated the process. उस सभा में द्रौपदी ने भगवान को पकड़ लिया ना, बांध लिया पूरा भगवान को, एकांतिक भाव से अपने अपने मन से, वचन से, शरीर से, बुद्धि से, सारी फैकल्टी को भगवान के नाम में लगा दिया, पूरा का पूरा भगवान के स्मरण में, भगवान का आश्रय लेने में, है ना, भगवान पे अपनी निर्भरता प्रकट करने में, डिपेंडेंसी दिखाने में. और हमारी प्रॉब्लम यही है, वी आर सो सेल्फ डिपेंडेंट, वी आर सो एडमेंट, we consider ourselves to be the doers, and if we consider ourselves to be the doer, then we take ourselves to be the enjoyers or sufferers. Then such was not the case with Draupadi. She let herself loose, she let herself free, she gave herself completely to Krishna, and Krishna appeared, incarnated for Draupadi in the form of sari. अवतार ले लिया भगवान ने द्रौपदी के लिए साड़ी के रूप में. उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी भगवान तो देखिए अवतार ले ही चुके हैं, आए हुए ही हैं, बस प्रकट होना बाकी है. अभी तक प्रकट नहीं हो पाए. क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में बहुत कल्मश है. जिस दिन हम भगवान को पुकार लें, उसी तरह से सारा छूमंतर हो जाएगा. कल्मश, भगवान प्रकट ही है वहीं पे, कहीं नहीं गए हुए. कहीं पे सबसे निकटतम तो भगवान ही है हमारे, सबसे निकटतम. ना माँ बाप है, ना पति पत्नी, ना बच्चे, सबसे निकटतम भगवान ही है. लेकिन जो बीच में जो दूरी है हमारे और भगवान के बीच में, वो थोड़ी समझ की दूरी है, विवेक की दूरी है, ज्ञान की दूरी है, या कपट की दूरी है. हाँ? हम में कपट काफी है, या यही पाप में वृत्ति, वासनाएं, या अपराध में वृत्ति, वैष्णवों के प्रति वासनाएं, यही संसारी चीजों में लोभ, आकर्षण इत्यादि, बस वही दूरी है. लेकिन नाम जप से भगवान इतना शुद्ध कर देंगे हमें, और इतना रस देंगे, अमृत देंगे. कृष्णा विल give us so much of joy, so much of nectar, so much of strength, so much of immunity, confidence, clarity when we chant his holy names, that there would be no separation between us and him in that relationship, in that communication. Bhagavad Gita again is to make all our communication in life go very smooth, make that communication, flow of communication very clear, smooth. Okay, so let us see the next text then, if no question. Huh? This is the pivotal or the turning point in Bhagavad Gita. Arjuna is surrendering to Krishna.
which means he is giving Krishna a chance to speak now. Likewise, in our life as well, so many turning points come. है ना? Uh, we do not realize how to make a U-turn, है ना? U-turn into a best turn, into an ultimate turn, is by surrendering to Krishna, and we can surrender from now itself. And surrender, again, surrender is a negative connotation. संसार में क्या ना भाई हाथ खड़े कर दिया, तभी ना सरेंडर सरेंडर हाथ खड़े कर दिए इत्यादि. अभी हमने हाथ खड़े करे रहे हैं माया की गोद में. Those who surrender, they give themselves to the police, to the authority, right? And then police puts them behind the bars and all, and look after them, but in a hard way, say. But likewise, we are surrendered towards Maya, and we never find real joy, satisfaction in this world. No, we never experience that sustainable peace saturating us. No, very short lived. Our joy, everything is very short lived. But if we surrender to Krishna, then we'll experience sublimity in life. Only then we'll experience Divyata, sublimity in life. Okay, let us see next. So life begins with surrender. मूल रूप से समझ सकते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तो वो आश्रित ही है ना, पैदे होने से ही वो आश्रित है बच्चा. नर्स को आश्रित है, हॉस्पिटल को आश्रित है, माँ को आश्रित है, बाप को, परिवार को. A child, the moment he is born, he is sheltered or surrendered. He surrendered to the nurse, hospital, doctor, mother, father, family, and all. Life begins with surrender, actually. तो कृष्णा वाला भावनामृत भी तभी समझ में आएगा जब हम अपने आप को थोड़ा समर्पित करें, और सबसे बड़ा सुख समर्पण में ही है. बिना समर्पण और सेवा के प्रेम नहीं है. प्रेम का मतलब ही समर्पण और सेवा. और संबंध में भी तभी मिठास रहेगी जब समर्पण और सेवा है, वरना संबंध में खटास है भाई, खटास है. Relationships will be fruitful, loving relationships, when there is surrender and an element of service to bring joy to our beloved. Otherwise, sour relationships, formal relationships. Interesting next verse. Every verse is tremendously interesting. So, nahi prapashyami mama, nahi prapashyami maman an mama अपनुयाद यच्चोकमुच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपत्नां रिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्. Okay, Evie, read just translation. I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it, even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. Thank you. I shall read first paragraph. Me, or sorry, did you say someone else? Harsha. Oh, Harsha, sorry. Someone else, actually. Although Arjun was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, Lord Sri Krishna. He could understand that his so called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence. And it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc., are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna.
Academic knowledge, scholarship, high position, etc., are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. Read that Kiba sentence Vipra. again. Um, mm, Therefore, Academic knowledge. Read that sentence again. academic knowledge, scholarship, No, high position, a sentence above therefore. therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said, Lord Chaitanya said that one who is a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. Kiba vipra kiba nyasi shudra ke na nae, yehi Krishna tattva veta sahi guru hoy. Okay, Diksha, you read. It does not matter whether a person is a Vipra, learned scholar in Vedic Buddhism, or is born in a lower family, or is in the renounced order of life. If he is a master in the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master. Chaitanya Chaitamrit Madhya 8.128. So, without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in the Vedic literature. सत्कर्म निपुनो विप्रो मंत्रतंत्र विशारद वैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु. A scholarly Brahmana, expert in all subjects of Vedic knowledge, is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in a family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. The problem of material existence, birth, old age, disease, and death cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. The problems of material existence, old age, disease, and death must be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all facilities of life, which are full of wealth and economically developed. Yet, the problem of material existence are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna. To the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. If the economic development and material अनुराधा माता जी आप पढ़िए. Economic development and material comforts could drive away one's lamentations for family, social, national, or international inbreedings.
then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of the demigods in the heavenly planets would be unable to drive away his lamentations. He sought, therefore, over the world can be finished at any moment by the catalysms of material nature. Even elevation into higher planetary situations, as men are now seeking on the moon planet, can also be finished at one stroke. The Bhagavad Gita confirms this. Kaschine punye martyalokam vishanti. When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest status of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentation. Therefore, if we want to curb lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna, as Arjuna is seeking to do. So, Arjuna asks Krishna to solve his problem definitely, and that is the way of Krishna consciousness. Yeah. Abhishek, read translation. ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही अभिषेक। कृष्णा, आप पढ़ पाओगे क्या? कृष्णा, पढ़ पाओगे क्या? ओके, हर्षा पढ़िए। I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it, even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. Now, this is very interesting if we see, right? That what uh, Arjuna is surrendering, and then he's saying like I do not know, I can find no means to drive away this grief, which is drying up my senses and all. And so, see, generally surrender sounds a bit of a heavy, right? But there's actually when one starts practicing Krishna consciousness, when one starts practicing, one finds that, oh, I would want to surrender more and more. I would like to surrender more and more. Okay, screen can be removed maybe now. I would like to surrender more and more. ये भाव, or when one feels that I'm not at all surrendered, all these paradox. Only one who is surrendered can actually say that I'm not surrendered, because he will always find his contrast so high. भगवान की महिमा जितनी हमारे चित्त में उजागर होती रहेगी ना, जितनी मात्रा में, तो हमें लगेगा हम कितने कम आश्रित हैं, कम आश्रित है, कम आश्रित है। संसार भले ही बोलता रहेगा ये कितने आश्रित है, देखो ये कितने आश्रित है, लेकिन एक साधक का वास्तव में कभी अपने आप को ऐसा नहीं समझेगा कि मैं कितना आश्रित हूँ। तो और देखिए, अर्जुन ने अपने आप को शरणागति के लिए कहा भगवान से, लेकिन फिर उसके बाद फिर भी वो थोड़ा विलाप या थोड़ा कह रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है घबराने की कि भाई कि हाँ भाई, पूरा शरणागति और उसके बाद भी हमारा मन नहीं लग रहा माला में, या हम बढ़िया से सुन नहीं पाते हैं, बढ़िया से रीड नहीं कर पाते हैं स्मरण चिंतन, या अभी भी आदत, या अभी भी सो मच मटेरियल कैलकुलेशन। बताओ कौन है संसार में जो ये मटेरियल कैलकुलेशन में नहीं बंधा पड़ा है? सब, है ना, सब। तो इसीलिए जीवन को तो यही सब चीजों से उतार निकलने के लिए बाबा है। कब हम ये मटेरियल कैलकुलेशंस करना बंद करेंगे कि क्या इस साल इतना बना लेता हूँ, उस साल इतना कमा लूंगा, अगले साल यहाँ घर हो जाएगा, यहाँ स्वास्थ्य का हो जाएगा, यहाँ ये व्यवस्था है, ये साड़ी खरीद लूंगी, ये गाड़ी खरीद लूंगी, इत्यादि इत्यादि। कितना ऑल दिस मटेरियल कैलकुलेशंस ना,
and then I will be happy, and then this will get me protected. Then I will be happy, then I will be feeling protected. और वो संसारी सुख ऐसा है कि हमेशा एक कदम दूर, एक कदम दूर। संसारी सुख ऐसा ही है, बस ये पढ़ाई कर लूं फिर मैं सुखी हो जाऊंगी। और भैया बिना संतुष्टि के तो सुख है ही नहीं, बिना संतोष के सुख है ही नहीं। और संसारी व्यवहार, रहन सहन इत्यादि हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा जीवन में, कभी नहीं मिलेगा। तो भले ही हम नाम जप और ऐसे करना हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई अब भाई अ, हम पूरा समर्पित नहीं हो पाए, पूरा समर्पित नहीं हो पाए और हम और हमारा मन हमें और सताता है। ठीक है ना, अब हमने तो अभी वचनों से भी नहीं बोला हो या इत्यादि, और धीरे धीरे भगवान बनाएंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने बोल दिया और फिर सीधा का सीधा हो गया पूरा समाप्त उनका। नो, बोल के भी वो फिर से उसी स्थिति में और वही परेशानी से जूझ रहे हैं। जब भगवान बोलने लगेंगे तब धीरे धीरे अर्जुन का बुखार ठंडा होते रहेगा, कम होते रहेगा। और क्या गजब का तात्पर्य ना, कई कई प्रभुपाद के तात्पर्य वास्तव में गजब के हैं। हम देखो, ये सब अनुभव की बात है। अगेन, कृष्णा भावनामृत में कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भक्त नहीं बना सकता वास्तव में। इन द सेंस ये तो शुद्ध भक्ति है जो प्रचार करते हैं, और उन्हीं की कृपा से भक्ति हम में संचारित हो जाती है, जो हम में है ऑलरेडी वो संचारित हो जाती है। हाँ? और क्या भगवान परमात्मा स्वरूप से विराजमान है ना सबके हृदय में। तो भगवान प्रेरणा देते हैं और भगवान की कृपा से ही बनता है, शुद्ध भक्तों की कृपा से ही बनता है। हम तो बस ये प्रयास है कि हम स्वयं को कितना समझा सकें, कितना हम अपने एक एफर्ट्स कर सकें, ताकि भगवान थोड़े से प्रसन्न हो जाए कि भाई एफर्ट्स लगा रहे हैं, वही उतना ही। बाकी कृष्णा भावनामृत कोई एफर्ट से समझने आने वाली चीज नहीं है। जॉब मिल जाएगी भले ही एफर्ट्स करके, गाड़ी हो जाएगा, शादी हो जाएगा भले ही एफर्ट्स करके इत्यादि, वो भी भाग्य और कर्म दोनों की बात है। लेकिन कृष्णा भावनामृत कर्म और भाग्य दोनों के परे है, एकदम परे। तो इसके तात्पर्य में क्या सुंदर लिखा ना प्रभुपाद ने, क्या वो एकेडमिक नॉलेज वाली लाइन, जो एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप इत्यादि, वो सब सब यूजलेस है। संसार को जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि इन सब से छुटकारा पाने के लिए, दिलाने के लिए ना, वो तो एक महत पुरुष सदगुरु है ना, उन्हीं के आश्रय में आके समाधान होगा। और अर्जुन वही कर रहे हैं। पहले बात करी ना, भगवान अर्जुन के लिए कई रोल निभा रहे हैं। भगवान भगवान का रोल तो निभा रहे हैं, सदगुरु का भी रोल निभा रहे हैं अर्जुन के लिए, है ना। माता पिता, मित्र का भी रोल, हर तरह से रोल निभा रहे हैं भगवान अर्जुन के लिए। तो ये, और कितना ही देखो, कितना ही हम धन जोड़ लें, फिर से तात्पर्य में पढ़ा ना जो दीक्षा ने दोबारा पढ़ा, बहुत सुंदर, क्या कितना ही धन जोड़ लो, कितना ही क्या कुछ जोड़ लो, लेकिन भाई ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उसका नहीं किया जा सकता समाधान। और ये सब मूर्खता है, मूर्खता है ना। कई लोग हैं भारत में, भारत के बाहर इत्यादि, क्या बस हमें धन हो जाए, फिर कुछ बीमारी भी हो तो चिंता नहीं है। और उनको लगता है कईयों को कि भाई ये धन हो जाए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगा बीमारी से, घर हो जाए मैं इससे प्रोटेक्ट कर लूंगा, उससे प्रोटेक्ट कर लूंगा। कोई रियल प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है, और ना ही कोई वास्तव में रियल पीस भी हो। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो फिर से अर्जुन ऐसा नहीं है अब समर्पित कर दे अपने आप को, तो कि भाई अब तो उनको युद्ध कर लेना चाहिए ना सीधा। हाँ, धनुष बाण उठा के मार देना चाहिए सबको, या जो भी करना हो। लेकिन समर्पित करके भी अर्जुन फिर से वहीं के वहीं पे ही है एक प्रकार से भी। तो हमें भी विचलित नहीं हो जाना चाहिए जीवन में कभी भी। ठीक है, अगला देखें क्या? कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो बताइए, अदरवाइज वी सी नेक्स्ट। लेट्स सी, maybe a couple more up until 10 actually. So
संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः. Anuradha, read translation. Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govind, I shall not fight, and fell silent. तो इतना कह के फिर अर्जुन बैठ गए. बुद्धिमत है भाई. छोड़ दो भगवान के हवाले. लेकिन क्या करें, हमसे छोटा भी नहीं जाता ना. केवल हम बोलते ही हैं कि छोड़ दो भगवान के हवाले. जॉब नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, छोड़ दो, अब तो भगवान ही देखेंगे जो करना होगा. भाई पहले भी भगवान ही देख रहे थे या पहले भी देख सकते थे ना. बुद्धिमानी यहीं पे हम अगर भगवान पे अपने आप को निर्भर कर रहे हैं, और उसका मतलब ये नहीं हम कुछ ना करें. उसका मतलब ये नहीं. अर्जुन देखो युद्ध करेंगे और अपने आप को भगवान को निर्भर सौंपते हुए युद्ध करेंगे. तो उसी तरह से हमें भी जीवन के पहलू में अपने आप को एंगेज तो करना ही है. ये कोई भगोड़ापन का नहीं है कृष्णा भावना में. रादर ये तो मृत्यु को गले लगाने वाली, आंख से आंख मिला के देखने वाली बात है. कवर अप में थोड़ी ना जीना है. कोई जीवन थोड़ी ना कवर अप में. ये तो सत्यता को कितना बोध हो हमें, कितनी हम परिचित में है सत्यता से और कितना अनुभव में है, उसके लिए. तो जितने जल्दी हम शरणागति लें भगवान की, उतना बढ़िया है, उतना अच्छा है. और ठीक है, 16 माला डायरेक्ट नहीं आए कोई, ठीक है भाई, एक माला तो आओ, एक माला आओ ना. और ऐसा नहीं है कि कोई 16 में आ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तभी भी है, लेकिन कीप काम एंड कैरी ऑन. तो अर्जुन यहाँ बैठ गए, और ये संजय कह रहे हैं कि अर्जुन बैठ गए और भगवान को बोल रहे हैं अब मैं फाइट नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, और शांत होके बैठ गए. तो ये धृतराष्ट्र के हृदय में कितना उसको, बोलते हैं ना इंग्लिश में, म्यूजिक टू माई ईयर्स. धृतराष्ट्र के हृदय में बहुत गदगद सा होने लगा कि भाई बढ़िया है. अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, अर्जुन बैठ गया है तो ठीक है, और बाकी पांडवास भी बैठ जाएंगे, ये अर्जुन सबसे बड़ा है भाई, तो हम जीत जाएंगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना. अगला श्लोका देखें. तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच. दीक्षा, रीड ट्रांसलेशन. दीक्षा ट्रांसलेशन. End of Bharata. At that time, Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. ठीक है, स्क्रीन शेयर वैसे चाहिए नहीं मेरे को, आप लोग को रखना हो तो देखिए. तो अब यहाँ पे, अब संजय ने कहा ना पहले, जैसे कि अर्जुन बैठ गए इत्यादि, तो धृतराष्ट्र का बड़ा उत्साह भी बन गया. लेकिन फिर तुरंत ही संजय कह रहे हैं क्या, कि उसी समय भगवान ने दोनों पार्टियों के बीच में फिर अब कहना शुरू किया. तो अब यहाँ से अब भगवान कहना स्टार्ट करेंगे वास्तव में. गीता का ज्ञान यहाँ से प्रवचन देना भगवान शुरू करेंगे. अब एक बार अनुवाद में आओ फिर से, और एक एक बताओ अनुवाद में क्या इंटरेस्टिंग चीज है. पकड़ ही लोगे आप लोग, कई बार मैंने पहले भी बताया. फिर से लाओ स्क्रीन में अनुवाद. अब बताओ, एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, थोड़ी नहीं, खूब ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है अनुवाद में. अनुवाद में ही है. हाँ अभिषेक.
फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है अभिषेक, और कृष्णा की भी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज कर सकते हो अभिषेक, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, आप शायद सुन पा रहे होंगे। बाकी बताइए अगर कुछ। हर्षा पढ़ो, अनुवाद पढ़ो एक बार। और हाँ बोलिए अनुराधा। सो अनुराधा इज मैसेजिंग स्माइलिंग, है ना, यही है। एट द टाइम कृष्णा स्माइलिंग इन द मिड्स ऑफ बोथ द आर्मीज। भगवान कभी पैनिक नहीं होते। ये पैनिक होना, फड़फड़ाना, फ्रस्ट्रेट होना इत्यादि, घबराना, ये सब भगवान को नहीं आता। एंजाइटी, पैनिक इत्यादि दिव्य है ना। भगवान का पैनिक भी होता है ना, कृष्ण का, वो भी दिव्य पैनिक है। होते हैं भगवान पैनिक भी होते हैं, एंशियस भी होते हैं भगवान, लेकिन वो सब दिव्यता है भगवान का। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर और भगवान खुद कंट्रोल्ड है। किनके प्रति, किनसे कंट्रोल्ड है? ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों से, गोपियों से ना, गोपियों से। ऑल्दो हमारा अधिकार नहीं है वहाँ पे ब्रजवासियों या भगवान का जो गोपियों के साथ संबंध है, तो वो किसी और दिन हम देखेंगे। लेकिन अभी इतना समझो मूलतः कि भगवान भी शासित रहते हैं, शासन भी करते हैं भगवान, और शासित भी हैं भगवान। भगवान आश्रय भी देते हैं और भगवान खुद आश्रित है ना। एक बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में आता है, राधा संगे यदा भाति अ, अ, तदा मदन मोहना, अन्यथा विश्व मोहोऽपि स्वयं मदन मोहिता। तो खैर भगवान वैसे तो देखो अन्य विश्व मोह अपी, पूरे संसार को मोह में फंसा रखा है ना भगवान ने। हम सब फंसे हुए हैं भगवान की माया जाल में एकदम से। लेकिन साधक ना इसमें भी एक सुख एक महसूस करता है, भाई फंसा हुआ हूँ लेकिन मजे है भाई, कृष्णा आपने फंसाया ना, चलो ठीक है भाई, क्या फंसाया भगवान, तुसी ग्रेट हो, है ना। यही साधक हमेशा ये अनुभव करना चाहिए, ओ गॉड तुसी ग्रेट हो भाई, क्या फंसाया भगवान, क्या माया आपकी, क्या रचना है, गजब। हाँ, वास्तव में उसको ऐसा अनुभव होता है। तो खैर भगवान भी आश्रित है, लेकिन अपने ब्रजवासियों के, उनके प्रेम, उनके समर्पण पे भगवान समर्पित है। तो भगवान कभी पैनिक नहीं होते जिस तरह से हम होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे हमेशा स्माइलिंग है। और भगवान ये स्माइल से देखो संदेश दे रहे हैं। भगवान की हंसी ना, वो संदेश देती है। क्या संदेश दे रहे हैं दोनों पक्षों को, कि तुम लोग ना इतना घबराओ मत या इतना सोचो मत कि अर्जुन बैठ गया, अब युद्ध नहीं करेगा। हमारी भी स्थिति ऐसी होती है ना, हम बैठ जाते हैं, बैठ गए भाई, अब हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अब भगवान बोलेंगे ना, अब बोलेंगे भगवान, तो अर्जुन खड़े होंगे और युद्ध करेंगे, और दबा दब युद्ध करेंगे, जोरदार, है ना, जोरदार। उसी तरह से हम भी अगर भगवान को बोलने दे, अपने आप को समर्पण करें, भगवान को अपने जीवन में लेकर आए, नाम जप के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भागवत गीता के अनुशीलन के माध्यम से, तो भगवान हमारे साथ भी वो संबंध जोड़े, है ना। हम भी ये प्रार्थना करें, और फिर भगवान हमारे जीवन में भी उसी तरह से अपना साक्षात्कार करवाएंगे, और हमें भी आत्यंतिक सुख की ओर लेके जाएंगे भगवान, हंसते हुए, हंसते हुए। तो स्माइल करके भगवान दुर्योधन एंड पार्टी को बता रहे हैं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, और अर्जुन को भी कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी समझो डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर भी घबराया जाए पेशेंट को देख के, तो बहुत दिक्कत है ना। लेकिन डॉक्टर अगर ठीक है और स्माइल कर रहा है, तो पेशेंट को कितना कॉन्फिडेंस आ जाए। तो वैसी बात है। ठीक है, अभी हम मंदिर में जाते हैं, गौरा आरती का समय हो गया वैसे। कोई प्रश्न जिज्ञासा, अन्यथा आज के हमारे प्रसंग को यहीं पे हम विराम दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में, एंड वी होप टू सी यू ऑल टुमारो। हरे कृष्णा।